Assalamualaikum. I hope you guys are doing well and welcome to another session. Today our topic is O levels and IGCSE covalent bonding. And so let's begin. We talked about the idea of bonding और उसमें हमने कहा था कि basically atoms के जो last shell होते हैं they determine what kind of bonding it will do. And of course there is three kinds of bonding based on that. So we said that they lose electrons if वन हैज़ टू गो टू ज़ीरो. तो अगर किसी के लास्ट शेल में 1, 2 और 3 होंगे तो वो कोशिश करेगा कि वो ज़ीरो पे चले जाए. सिमिलरली अगर किसी के लास्ट शेल में 7, 6, 5 कोई इस तरह के नंबर्स होंगे तो वो ट्राई करेगा कि वो 8 पे चले जाए. और अगर इन दोनों को आपस में मिलाप करते हैं आप कि मेटल एंड नॉन मेटल है या कोई ऐसा एटम है विच वांट्स टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन एंड वन वांट्स टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन, तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं. श्योर उसमें ये मैटर करता है कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ग्रुप 6 वाले को 2 चाहिए, तो ग्रुप 1 वाले को लूज़ 1 करना होता है. सो इट डिपेंड्स कि वो कितने लूज़ करता है और वो कितने गेन करता है. बट एट द एंड ऑफ इट हमारे पास आयंस बनते हैं और वो आयंस आपस में बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एक दूसरे को सराउंड करते हैं. एंड वी सॉ द लैटिस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन दैट और इफ़ यू नीड टू रिव्यू इट, सो फील फ्री टू go to the video. I'll post the link over here. Now the next thing is, what if they don't want to lose? What if two atoms that are bonding, they both want to get to 8? तो उसके लिए हम covalent bonding करते हैं. So covalent bonding, the word is actually a portmanteau of two words. दो लफ्ज़ों को मिला के बनाया गया. Co means sharing and valent means last shell. So sharing in last shell. There you go. That's as simple as that. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का बेसिक आइडिया तो यही है कि उनके पास लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको शेयर करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं उस लिहाज से पता लग जाता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको गेन करने हैं या वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. अब इसका मतलब है व्हाट मैटर्स इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर लास्ट शेल में 7 होंगे तो उसको एक और चाहिए, तो एक और शेयर कर लेगा. So how does that happen? Let's take the very simple case, hydrogen atom. Hydrogen atom is basically like this. It has one shell with just one electron. और इसी तरह एक और hydrogen atom हम ले लेते हैं, but this time just to differentiate कि ये कोई और atom है और वो same atom है, I will take the circle, same circle, जिसका shell है, and I will put a cross. Cross का मतलब है कि it's a different electron. Now when I share them, when I bond them together, so I have two hydrogen atoms. मैं इसको लिखूँगा 2H. 2H का मतलब ये हुआ that I have one hydrogen atom and I've taken two copies of that, two hydrogen atoms. And now they're going to react. And because hydrogen का एक ही shell है और उस shell को complete करने के लिए 2 electrons चाहिए होते हैं, so hydrogen will share that one electron. वो लूज कर सकता है, the other one can gain that, but then कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा ये उस पर डिपेंड करता है. सो दैट इज़ वाई व्हाट इट विल डू इज इट विल काइंड ऑफ शेयर दिस इलेक्ट्रॉन. तो हमारे पास ये होगा कि दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन will be shared between them. So you notice this area that is common in both of them, this one, this is where this electron will come and it will be shared between these two atoms. अब अगर आप देखो, then this nucleus, the left one, is pulling on this shared pair. Similarly, this nucleus is pulling on this shared pair. और ये जो force of attraction है, जो shared pair of electrons को attract कर रही है, that is what covalent bonding is. So what's covalent bond? It is the force of attraction. मैंने आपको बताया था any kind of bonding is always a force of attraction. So force of attraction between two nuclei, obviously दोनों atoms के nuclei होंगे, and shared pair of electrons. Okay, so that is what this is. You have shared pair of electrons और उनके बीच की जो strong bonding है उसको हम covalent bonding कहते हैं. Okay, so I hope that part is clear. So we have this shared pair of electrons and this pair इसको हम बोलते हैं bond pair. Okay, so this is a bond pair. Bond pair मतलब it is a pair of electrons that's involved in bonding.
और इसको लिखूंगा कैसे? आई हैव वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 लिखने का मतलब ये है बेसिकली दैट देयर इज टू हाइड्रोजन एटम्स दैट हैव जॉइन टुगेदर. ओके, सो उनको जॉइन टुगेदर करने के उनके ओवरलैप से हमारे पास ये चीज़ बनी है एंड दिस इज वन मॉलिक्यूल. सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस. So there are 9 such molecules जिनका structure बनाना आपको आना चाहिए. Now this one, the top one, this is called dot and cross diagram. Okay, this is called equation, chemical equation या symbol equation बोलते हैं. And the third way of representing it उसको हम बोलते हैं electron dot diagram या इसका एक और नाम है Louis diagram. Or we also call it caie diagram because caie and Louis were both important scientists who helped develop this idea. So electron dot diagram, Louis diagram या caie diagram वो क्या होती है? You basically have hydrogen, so this hydrogen atom and this hydrogen atom उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है. So we'll draw one line in the middle. So ये जो एक लाइन है ना, इसका मतलब है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये शेयर किया हुआ है उन्होंने और ये हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है. ओके, या लुई डायग्राम है. सो दैट्स हाउ दिस गोज. सॉरी, या सो दैट इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके, सो इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और उनको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. एंड देयर आर 9 मॉलिक्यूल्स दैट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ. सो वी आर गोइंग टू डू देम वन आफ्टर अनदर. ओके, लेट्स स्टार्ट. So hydrogen, this was it. Let's start with the next one, which is chlorine. Cl2. इसका मतलब है two chlorine atoms bonded together. Okay, so let's start. So first thing I need to know, how many atoms, how many electrons does chlorine have in the last shell? So chlorine is in group 7. तो उसको कितने चाहिए होंगे? 2. Okay, 2 atoms होंगे chlorine के और इट्स इन ग्रुप 7 तो उसके लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो उनको एक एक चाहिए, मतलब हर एक के पास 7 है, उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू मेक 8. सो दे विल शेयर 1. तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप 2 क्लोरीन एटम्स बनाओ. ठीक है, टेक 2 कॉपीज ऑफ दिस थिंग, ओवरलैप देम. दिस ओवरलैप शोज कि वो बॉन्डिंग की हुई है उन्होंने. नाउ बिकॉज दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन तो उनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यू विल ड्रॉ दैट. सो दिस इज 1 बॉन्ड पेयर. जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने बॉन्ड पेयर्स होते हैं. सो दिस इज 1 बॉन्ड पेयर. अब दिस क्लोरीन हैड 7 इलेक्ट्रॉन्स टू स्टार्ट विद एंड यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड 1. तो अब हमारे पास 6 बच गए हैं जो शेयर नहीं हुए. सो विल ड्रॉ दोस 1 2 3 4 5 and 6. Similarly, for the other chlorine atom, you have 6 electrons जो कि शेयर नहीं हुए हुए. तो 1 2 3 4 5 and 6. सो हमारे पास क्लोरीन के इस तरह से शेयरिंग हो गई एंड वी हैव क्लोरीन मॉलिक्यूल. अगर इसकी मैं लुई डायग्राम या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाऊंगा, सो आई हैव 1 क्लोरीन, another क्लोरीन, उनके बीच में 1 line. This 1 line is showing that they're sharing 1 pair of electrons. Okay, so इसमें covalent bonding क्या है? Covalent bonding is the attraction of this nucleus and this nucleus to this bond pair, and that's covalent bonding. Covalent bonding is always the force of attraction between the shared pair of electrons and these nucleuses. Okay, so I hope that is clear. So we have electron dot diagram या जिसको हम Louis diagram बोलते हैं और जिसमें हम 1 line shows 1 bond pair and then we have the molecule. And this molecule has this whole thing going on for itself. Okay, so that's how it is. Now let's try one more, and that is oxygen, O2. O2, how does that work? So again, take the oxygen atom, look it up in the periodic table. It's in group 6. इसका मतलब है इसको 2 और चाहिए. So we'll draw the 2 circles. Okay, इसको 2 चाहिए ना, सो इट विल हैव 2 बॉन्ड पेयर्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेगा. सो 1 2 इसने शेयर कर दिए, 1 2 उसने शेयर कर दिए. अच्छा, समटाइम्स यू कैन ड्रॉ देम लाइक इट डजंट मैटर वेदर यू ड्रॉ इट हेयर और यू ड्रॉ इट इन द मिडल, एक ही बात है. नाउ दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम. बोथ ऑफ देम स्टार्टेड विद 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव शेयर्ड 2. सो पीछे कितने बचे? 4. स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक समटाइम्स दैट व्हाट दे डू इज कि वो
कहते हैं 2 उसने शेयर कर लिया और 6 उसके पास थे तो वो बाहर 6 बना देंगे. रिमेंबर दैट्स अ कॉमन मिस्टेक, डोंट फॉल फॉर इट. यू नीड टू रिमेंबर दैट यू स्टार्ट विद 6 और आपने उनमें से 2 शेयर कर दिए. जब 2 शेयर कर दिए सो लेफ्ट विद 4 मोर, सो वो 4 साइड्स पे आ जाएंगे. You can use cross for one and you can use circle for the other, and that is how we have this oxygen molecule. और इस oxygen molecule में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हुए हैं. So we draw 2 lines to show 2 electron pairs that are being shared. Okay, so every line is 1 pair, so 2 pairs मतलब हमारे पास ये 2 electron pairs share हुए हैं, and that's oxygen molecule. Let's try one more, and this one's interesting. This one is nitrogen. Again, method remains the same. Here's what you do. You draw the 2 atoms. Okay, so let's draw the 2 atoms. अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा होती तो हम उनको बनाते. Okay. Now, this one is nitrogen. That one's also nitrogen. Okay. Now, nitrogen is in group 5. So, it needs 3 more. Again, आपने ज़हन में रखना है कि इसको 8 बनाने के लिए कितने चाहिए. So it needs 3 more. So nitrogen is going to share 3. So 1, 2, 3, 1, 2, and 3. So it has shared 3 electron pairs each. And now we have 2 electrons that are on the, that are left over. Remember, group 5 shared 3. So you're left with 2 electrons. So we'll draw 2 here. And for this one, 2 here. Now these electrons that are involved in bonding, they are called bond pairs. So how many bond pairs? Nitrogen has 3 bond pairs. And this one, which is not involved in bonding, is called lone pair. Okay? So bond pair, that means it has 3 electron pairs being shared. So जितनी bonds होंगी उतने electron pairs होंगे. और lone pair का मतलब है that this is not involved in bonding. Okay, so now if I want to draw the electron dot diagram or Louis diagram, so I'll simply take nitrogen, 3 lines with the other nitrogen. Notice every line is 1 pair of electron being shared, or n का मतलब है n atom. So that is how you get it. Nitrogen molecule बन गया हमारे पास. Why did it share 3? Because in group 5 इसको 3 और चाहिए तो इसने 3 शेयर किए. So these were all elements. Notice that you have hydrogen, दोनों atoms hydrogen के. You have chlorine, both the atoms are of chlorine. You have oxygen, both the atoms of oxygen. And you have nitrogen, both the atoms of nitrogen. Okay? And moving on, now we are going to draw compounds. Compounds are substances that are made of different kind of atoms. तो हो सकता है एक को 2 चाहिए हो, एक को 1 चाहिए हो, और उस तरह हमारे पास डिफरेंट मिसमैच हो जाता है, लेकिन उससे भी वी गेट सो मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी सिंपल वन, HCl. नाउ हाउ डज HCl वर्क? You again have to draw 2 atoms. So hydrogen, 1 circle for that. And chlorine, 1 circle for that. Of course, chlorine is a bigger atom than hydrogen, but it doesn't matter whether you draw them same size or one bigger, one smaller, एक ही बात है. So hydrogen and chlorine. Now, start with any one. How many does hydrogen need? 1 more, right? It has 1, so it needs 1 more. So it's going to share 1 pair. Now, how many does chlorine need? 1. So वो तो already share कर लिया उसने. It had 7, so उसमें से एक share हो गया, 6 बचे. So we'll put 6 on the sides. And there you go. That is HCl. How does the electron dot diagram come out to be, और Louis diagram कैसे बनेगी? HCl. उनमें एक bond pair है, तो 1 line. Every bond pair has 1 line. So हमारे पास यहाँ पर एक bond pair बन जाएगा. Alright? Okay. Let's do another one. This is H2O. And this is the first molecule that we're seeing जिसमें 2 atoms से ज़्यादा हैं. So how do you figure this out? So for this one, you first draw central atom. Central atom is always the one with more bonds. Okay, so let's see. Hydrogen has 1 electron. It needs 1 electron. So hydrogen will make 1 bond.
Oxygen has 6 electrons. It needs 2 more. Again, I'm talking about the last shell. Inner shells की बात नहीं हो रही है. So oxygen has 6 in the last shell. उसको 2 और चाहिए. So इसका मतलब है oxygen ज़्यादा bonds बनाएगा, तो center में oxygen आएगा. Okay? और उसकी sides पर 2 hydrogen आ जाएंगे. लीजिए. Alright, so I have oxygen in the center, hydrogen on the sides. H2O, that means 2 hydrogen atoms. Now, this hydrogen needs to share 1. So it will share 1. That hydrogen also needs to share 1. So it will share 1. And now, hydrogen is done. What about oxygen? Oxygen had 6. It has shared 2. One with one hydrogen, one with another hydrogen. So now you're left with 4 electrons. So we'll draw the 4 electrons on the side. Again, if you notice, you have 2 lone pairs and 2 bond pairs. So let's draw the Louis diagram. So it will be oxygen in the middle and hydrogen on the sides. In O levels or IGCSE, it does not matter what angles you draw them at. So you can draw bigger angles, smaller angles, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप उनको सीधा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. O levels and IGCSE में. Of course, A levels में फर्क पड़ेगा. So we'll see about that when we study A levels. Okay, so there you go. अगर आपके पास 2 से ज़्यादा atoms हैं, draw the central atom and it's the one that needs more bonds. So let's try another compound. I'll just put it here in case you're looking at it. So let's try CO2. Okay, again, we have more than 2 atoms, so we'll look for the central atom. Carbon has 4 electrons, which means it needs to share 4. इसको 4 और चाहिए. Oxygen has 6 electrons, तो इसको 2 और चाहिए. Carbon को 4 चाहिए, oxygen को 2 चाहिए. So carbon को ज़्यादा चाहिए, तो carbon will be in the center. So we'll draw carbon in the center and we'll draw 2 oxygen on the sides. Again, आप बड़ा atom बना सकते हैं, छोटा atom बना सकते हैं, up to you. There you go. Now let's see. How many does oxygen need? It has 6, so it needs 2 more. So it will share 2. Similarly, the other oxygen also needs 2, so it will share 2. And good. Now let's see. Oxygen had 6, it shared 2. So अब इसके पास 4 रह जाएंगे. So we'll draw the 4 electrons on the sides. Similarly for this oxygen, 4 electrons on the side. You can also do it like this के आप इसके भी circles ही बना दें. And if you want to be like to differentiate them, so आप इसके electrons को fill कर दें. It's up to you. You can use cross, you can use filled circle, or you can use simple circle. And that way we have shown that these are the electrons that they're sharing. Again, you could have just put them खाली उस तरह से because that will also be fine. अब इसकी electron dot diagram क्या होगी? Carbon in the center, oxygen on the sides, 2 bonds इसके साथ because notice that I have 2 bond pairs. हर कार्बन के हर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड पेयर है. तो अगर मेरे पास 2 ऑक्सीजन है तो मैं दोनों को अलग-अलग बनाऊंगा और मैं दोनों की अलग-अलग बॉन्ड्स बताऊंगा. बिकॉज यू विल सी लेटर ऑन कि कार्बन कई दफ़ा 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहा है लेकिन एक के साथ 2 कर रहा है शेयर, एक के साथ 1 कर रहा है शेयर. सो आपको जितने भी एटम्स होंगे सब एटम्स ड्रॉ करने होंगे और उनकी सबकी इंडिविजुअल बॉन्ड्स आपस की बतानी होंगी. सो ओवर हियर दिस कार्बन इज शेयरिंग 2 bonds with 1 oxygen, 2 with the other oxygen, and that is how we are able to figure this out. Okay, let's try one more. This is, मैंने आपसे कहा था we have to draw 9, so we are almost at the end of it. So now let's do CH4. CH4, again, carbon is attached to 4 hydrogens. Carbon needs 4 electrons, क्योंकि वो group 4 में है, उसको 4 चाहिए तो उसको ज़्यादा चाहिए. Carbon will be in the center, okay, and hydrogen will be on the sides. Again, you can draw same size, you can draw smaller size, completely your choice. Okay, okay, so carbon in the center surrounded by 4 hydrogens, CH4. Now carbon has 1 that is going to share with 1 hydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए. सो इस हाइड्रोजन के साथ एक शेयर हो गया, उस हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए, so it will share 1. This one also needs 1 more, so it will share 1. This one also needs 1,
so it will share 1. Now let's see. Every hydrogen has shared 1 electron pair and every carbon has shared 1 electron with each of them. So हमारे पास कार्बन के 4 थे, चारों बॉन्ड्स बन गई, और हाइड्रोजन की एक था, एक की बॉन्ड बन गई. So we are done. The Louis dot diagram would be carbon in the center, 1, 2, 3, 4, as you can see, hydrogen, 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 hydrogen. Here's a word that I want to tell you. जब भी कभी सेंट्रल एटम 4 बॉन्ड्स बनाता है ना, हम उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल structure, okay, yeah, tetrahedral shape. So this is just a word that we're going to draw. Tetrahedral shape. Tetra means 4, hedron means sides, so 4-sided shape. That's what we're going to draw. Okay, let's do one more. NH3. Okay, I would suggest take a minute, pause the video and do it. Here's how you should be doing it. So again, look at the one that needs more. Nitrogen in the center, it will need 3. Why? Because in group 5, उसको 3 और चाहिए, वो center में होगा. उसको ज़्यादा चाहिए ना. हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए. So nitrogen atom in the center, just like carbon को 4 चाहिए थे, तो हमने उसको center में बनाया था. And 3 hydrogen on the sides. Sorry. Okay. So hydrogen, hydrogen, hydrogen. This hydrogen needs 1, so it will share 1. This hydrogen needs 1, it will share 1. इसको भी एक ही चाहिए, so it will share 1. Now notice, nitrogen had 5. उसमें से 3 इसने share कर दिए. So now it's left with 1 pair of electrons. 5 थे, 3 share हो गए, 2 बच गए. So those 2 on the sides. And the Louis dot diagram would be N. There you go. You can draw the 2 electrons here if you want, but in O levels and IGCSE, even if you leave it like that, that's acceptable. And so you have ammonia. I'm going to give you 2 interesting ones that I would suggest आप लोग try करें उनको draw करने का. One is CH2O and the other one is HCN. Try to draw it. Go on. So again, these are slightly challenging. तो हम इसको देखते हैं. Again, central atom वही होगा जिसको ज़्यादा चाहिए. So carbon को ज़्यादा चाहिए because look at the periodic table. Carbon is in group 4, hydrogen को एक चाहिए और oxygen is in group 6. So it's like carbon needs 4, hydrogen needs 1 and oxygen needs 2. Okay? So carbon has the most electron that it needs. So carbon center में आएगा. और हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा. So 2 hydrogens, 1 oxygen. Now carbon in the center. How many does hydrogen need? 1. So it will share 1. How many does this hydrogen need? 1. So it will share 1. How many does this oxygen need? 2, because it's in group 6. इसको 2 चाहिए. So it will share 2. 1, 2, 3, 4. So 2 pairs is what it's sharing. Okay. How many electrons does oxygen have? 6. उसमें से 2 share हो गए तो 4 are left over. And there you go. It's complete. How will we draw the Louis dot diagram? Carbon in the center, 1 hydrogen, the other hydrogen, and 2 oxygen like that. There you go. Let's try the HCN. Again, this carbon needs 4, nitrogen को 5 में है तो उसको 3 चाहिए and hydrogen को 1 चाहिए. So carbon is the one that needs the most. So carbon will be in the center. Nitrogen over here.
एंड हाइड्रोजन उसके साथ। सो कार्बन इन द सेंटर, 1 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नीड्स 1, सो वो 1 शेयर करेगा। नाइट्रोजन नीड्स 3 बिकॉज ग्रुप 5 है, 3 और चाहिए तो वो 3 शेयर करेगा। नाइट्रोजन के भी 3, कार्बन के भी 3। नाउ नाइट्रोजन हैड 5, तो उनमें से 3 शेयर हो गए, 2 आर लेफ्ट ओवर, सो 2 साइड पे आ जाएंगे एंड देयर यू गो, इट्स कंप्लीट। नाउ हाउ विल द लुईस स्ट्रक्चर वर्क फॉर दिस? कार्बन इन द सेंटर, हाइड्रोजन ऑन द साइड, नाइट्रोजन ऑन द साइड। अब हाइड्रोजन और कार्बन आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो ये एक कैसे कर देंगे। एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन आर शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की लाइंस बन जाएंगी। एंड दैट इज हाउ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो ये तो हमारे पास थे सिंपल मोलिकुलर सब्सटेंसेस। एज यू कैन सी वी हैव ड्रॉन ऑल ऑफ देम। ये कुछ एक्स्ट्रा बन गए हैं सर्कल्स, लेट मी जस्ट erase them. Okay, so these are all here. So we have drawn all of these, and in all of them we have covalent bonding, which is the force of attraction between the shared pair of electrons with the 2 nuclei on the sides. Up, this is not the only force that all of these things have. Once the molecules are made, then every molecule is independent of the other molecule. तो अगर हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, so this water molecule is here, and let's say I have another water molecule. Now what happens is that these water molecules, even though उनके बीच में covalent bonding है, उनको एक दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं, they still have some force of attraction between each other. So there is one force of attraction which is very strong, and that's covalent bond. So this is covalent bond. But there is another force of attraction which is between the molecules, and it's called intermolecular force of attraction. So this is the second kind of force that they have. Okay, again both of them are forces, both of them are bonding, but intermolecular इतनी weak होती है हम उसको bonding बोलते ही नहीं है, हम उसको खाली force बोलते हैं। and इसको मैं बोलूँगा IMFA, intermolecular force of attraction. इसका एक और नाम भी होता है, it's called van der Waals forces. Okay, now van der Waals forces, जिसको मैं VDW लिख सकता हूँ, van der Waals forces या IMFA, determine physical properties of molecular substances. It's a super important point that you have to remember. All the physical properties come from the force of attraction. Ionic compounds में वो ionic bond थी, आयंस के बीच की बॉन्ड, अगर वो स्ट्रॉन्ग थी तो उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो रहे थे, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी एंड ऑल ऑफ दैट. बट उसमें और इसमें एक मेजर फ़र्क है. मेटेलिक बॉन्डिंग में भी हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड ही थी जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करती थी. मेटेलिक बॉन्ड में भी लैटिस था, आयनिक बॉन्ड में भी लैटिस था. यहाँ लैटिस नहीं है. जब लैटिस होता है ना तो इट इज़ द बॉन्ड दैट डिटरमिन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. बट जब लैटिस नहीं होता तो इट इज़ वैन डर वाल्स फोर्सेस दैट डिटरमिन फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो रिमेंबर दिस, फॉर लैटिस इट इज़ द बॉन्ड, and for molecular substance when there is no lattice it's the force of attraction, intermolecular force of attraction, van der Waals forces, they determine the physical properties. तो इसका मतलब है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इट इज़ डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन. सेकेंड, डू दे हैव मेल्टिंग पॉइंट, हाई और लो, और डेंसिटी. ये दो मेन चीज़ें आती हैं. सो दे आर बैड कंडक्टर्स. वाई? बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डोंट से आयंस, बिकॉज आयंस आर नॉट प्रेजेंट है, इट्स इलेक्ट्रॉन्स. बट वो फ्री नहीं है. जो फ्री नहीं है, बॉन्डिंग में है या लोन पेयर हैं, वो बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या वो बॉन्ड कर रहे हैं या वो लोन पेयर में हैं जो बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बट वो फ्री नहीं है. नन ऑफ देम आर फ्री. इसका मतलब है कि वो बिजली कनेक्ट नहीं कर सकते, हीट कनेक्ट नहीं कर सकते. सो दे आर बैड कंडक्टर्स एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. वाई? बिकॉज वीक फोर्सेस कैन बी ओवरकम
with less energy. And that is what matters. For lattice, forces are strong. Bonding होती है ना lattice के अंदर, which determines this. तो उसकी वजह से forces बहुत strong होती हैं, तो इस वजह से lattice के structure में high melting point होता है. जब lattice नहीं है तो intermolecular forces हैं. Intermolecular forces हैं तो वो weak हैं, उनको तोड़ने के लिए energy भी कम चाहिए. And that is why they have low melting point, low density. Alright? So yeah, these are simple molecular substances and they have covalent bonding. We will keep a lesson tomorrow. It will be a short lesson tomorrow. It will start at 9:30. And that will talk about what if we have a stronger kind of covalent bond. Alright? See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.